Hello everyone, very good morning. I hope everyone is doing well and good. So today in the class we are going to start with center of mass and collision. Okay, these are really very important topics in terms of concepts, questions coming also. So let's start with it. I hope you people are doing questions from whatever topic has already happened, also from whatever topic has not yet happened. So overall, I want to say I hope आप लोग practice कर रहे हो questions. So that is very important, है ना? Let's start now. सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले मैं तुम लोगों को गो थ्रू करवाऊंगी सिंपल सिंपल फॉर्मूला से. सो सेंटर ऑफ मास जब हमारा कंटिन्यूअस बॉडीज होता है दे आर ऑफ यूनिफॉर्म mass density, they have uniform mass density, then the center of mass will be at geometrical centers, you already know. ठीक है. सो यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए ये वाला पॉइंट होगा विच इज एट हाफ ऑफ इट्स b/2 and a/2, right? For triangular plate it will be at a distance h/3 from the bottom, where h is the height of triangle, right? And for semicircular ring, if you remember, it is 2r by pi. ठीक है. Its center of mass is outside the body, so it is possible that center of mass can lie outside the body. Semicircular test के लिए we also use this formula in some questions in laws of motion or something, or before that I don't remember exactly, but we used it, right? So इसका center of mass is this much from what point? From O point here, so this is 4r by 3 pi. ठीक है. उसके बाद हेमिस्फेरिकल सेल है, इट्स सेंटर ऑफ मास विल बी एट अ डिस्टेंस r/2 लाइक दिस. एंड फॉर अ सॉलिड हेमिस्फीयर दिस इज एक्चुअली हॉलो हेमिस्फीयर. ठीक है. दिस इज हॉलो वन, एंड इफ इट इज सॉलिड then for this case center of mass will be at a distance of 3r by 8. ठीक है, again from the bottom. If you talk about circular cone, then its center of mass will be at a distance of from here h/4. And if we talk about what, see, this is a circular cone solid, so this is a solid one, always remember. And this is the hollow one. Hollow one का मतलब समझ रहे हो ना? Inside that cone there is nothing, vacuum. So for hollow cone, center of mass will be at a distance h/3 from the bottom. ठीक है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा? h/3 पे होगा. सो दिस आर द जनरल फॉर्मूलाज जो कि हमें पता होना चाहिए. उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स, आप लोगों को फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, हाउ टू कैलकुलेट XCM, YCM, ZCM, राइट? You know how to write it in terms of vector. So vector के term में भी, if there are two particles, their position vectors are given r1, r2, you can write the position vector of center of mass like this. So this is this thing. Now center of mass calculation with cavity. What is it basically? So if there is a let's say solid sphere, and what you are doing, you are just taking certain mass of it out. Done है. So you're creating cavity. Let's say mass of the whole solid sphere was capital M, and mass of this cavity which was taken out is small m. Then how you will calculate the center of mass of the remaining portion? So center of mass निकालने के लिए what we do is simple. सबसे पहले तो coordinate लोगे. Let's say this is the origin. So from origin, first you will see what is the coordinate of center of mass of the complete body. So complete body का coordinate कहाँ रहा होगा? At its center. So at the origin itself. And where will be the center of mass of the body which has been taken out? So its center of mass will be somewhere here. Let's say this is x2. x1 is already 0. So center of mass आप कैसे लिखते हो? mx1 minus mx2 divided by m1 minus m2. So this is the formula we use. ठीक है. अब चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं. So this is a question of frustum basically. I will want you people to solve it. फ्रस्टम तुम्हारा कैसा होता है? कोन को अगर आपने कट कर दिया, जैसे कोन कैसा दिखता है ऐसा, इसको आपने अगर यहाँ से कट कर दिया, then you have just taken this portion out, so you will be getting something like this, right? So this is your frustum. Okay. फ्रस्टम का वॉल्यूम हम कैसे लिखते हैं? फ्रस्टम का वॉल्यूम इज रिटन लाइक दिस, वेयर h is the height,
आर हाइट कहने का मतलब ये वाला हाइट की मैं बात कर रही हूँ. वन रेडियस विल बी फॉर दिस पोर्शन, अनदर रेडियस विल बी फॉर दिस पोर्शन. So this is the volume formula, and its center of mass again from the bottom is taken to be at a distance of 11 h by 28, where h is the height. ठीक है. So this is the formula. Why I have included this one? Because this is also a sort of geometry. Somewhere I saw it. I mean, so I felt like you should know this one. Then, if you are interested, you can do this question. Or you should do. Cavity का question है. इससे तुम्हारा calculation check हो जाएगा. How accurate calculation you can do. क्योंकि यहाँ पे calculate करना होगा चीजें. So, concept is easy, clear. You know the formula and everything. This is here, right? Take out your pen and paper, do this question, and let me know your answer. ठीक है. Agree? चलो, this is the question now. Okay. I hope you people are doing it. Solve कर रहे हो सभी लोग, I guess. देखो, कैलकुलेशन तो तुम्हें ही करना है. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. तो आंसर तुम्ही लोगों को बताना है. 9 people are here. कुछ लोग तो आंसर बताओ एग्जैक्टली. अराउंड वट एवर यू आर गेटिंग. फॉर्मूला में लिख दूं. सेंटर ऑफ मास फ्रस्टम का होगा 11 h/8. ठीक है. वॉल्यूम क्या था? πh/3 r² + सॉलिड सिलेंडर है. इसका सेंटर ऑफ मास तो तुम लोगों को पता होगा, एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर. सो फ्रॉम द बॉटम इट विल बी एट अ हाइट ऑफ h/2, राइट?
डेंसिटी कुछ भी रो लेकर चलो, कट जाएगा वो फाइनली। हो रहा है सबका? एवरीवन एबल टू डू इट? Okay, so I mean, concept wise, it is clear. Rest thing is your calculation that you need to do. I mean, first you will be calculating the mass of frustum. ठीक है? That will be rho into pi h by 3, pi into h 20, मैं सबको सेंटीमीटर में ही रहने देती हूँ, by 3. R का स्क्वायर, radius is how much? One is 10 centimeters, so 100. Another is 5 centimeters, so 25. R into R will be 10 into 5, that is 50. So, how much is the value? You will be getting rho pi by 3 into 20 into 175. ठीक है? So, this is the mass of frustum. What will be the mass of cylinder? Mass of cylinder will be pi r square, radius, whatever is its radius, into its height h into rho. So, pi को pi रहने दो. R dash का square कितना होगा? Its diameter is 5, so its radius is 5 by 2. It means 25 by 4 into how much you are going to get. Himanshu, yes. It feels like around you are getting the same, almost. ठीक है? So this will this, and h is let's say it's पाई एच बाई 3 था ना, यहाँ पे भी h था, h को मैंने 20 रखा. इसको h को h ही रहने दो, क्योंकि यहाँ भी इस एच को एच ही रहने दो, क्योंकि दोनों का एच सेम है. सो 25/4 इंटू एच, दिस इज द मास ऑफ सिलेंडर. अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम्हें सिंपल फॉर्मूला बैठाना है. तो मास ऑफ दिस फ्रस्टम इनटू इट्स सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसको तुम लेवल लेकर चलो. लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस. हियर इज द ओरिजिन. ठीक है? सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास? अगर, या फिर यहाँ पे करने का कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ से वाई एक्सिस को टच करवा दो. दिस इज द ओरिजिन. सो फ्रॉम ओरिजिन व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रस्टम? फ्रस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 11h/28 माइनस मास ऑफ सिलेंडर इनटू what will be its center of mass from this origin? I mean, it is lying on the y-axis itself, and that will be at a height of 10 centimeters. So 10 divided by mf minus mc. So this is what you need to do. You need to put in the value, you will be getting the answer. So answer is around 7.6 centimeter. ठीक है? सबका आना चाहिए था. क्या कर रहे हो तुम लोग? कैलकुलेशन, तुम लोगों का कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए यार. तुम लोग रोज ही क्वेश्चंस कर रहे हो. सो एक टारगेट और होना चाहिए कि कैलकुलेशन शुड बी फास्ट एंड एक्यूरेट एट द सेम टाइम, नॉट ओनली फास्ट. ठीक है? फास्ट और रॉन्ग हो गया तो फास्ट स्लिप कर जाओगे. दैट शुड नॉट हैपन, राइट? Now, center of mass of calculation for continuous mass body, we do the integration method. You all must be aware of this formula. So I've just written here because in questions you might get some different continuous body. You are required to use the basic formula. So this is the basic formula. This is how you can calculate XCM, YCM, ZCM. Okay. Now let's do this question for continuous body. Apply karo aur batao. Take your time. Let me know your answers.
Anyone? It should not be taking this much of time because this is not that lengthy question. What is it saying? There is a uniform rod AB of length L has linear mass density this. So this is not uniformly its density is not uniform, simple. So density as a function of x is given A plus bx by L. Then we have to calculate the center of mass from distance from point A. Yes, Himanshu, that's great. Correct. Thank you. So this is this, right? How you will calculate the center of mass? So basically, we have to calculate the x coordinate, right? Because this rod I have drawn here, this width doesn't seem like negligible, but it's actually negligible. ठीक है, मैंने draw करने के लिए बड़ा दिखाया है. So let's say its center of mass is somewhere here, or let's not assume anything. I would say. So how we will calculate the center of mass? This is not this is a continuous body, but its density is not uniform. Its center of mass cannot be at its geometrical center. Use the formula just the moment before I saw you, the formula that that I have written over here, right? So use it. XDM क्या लिखोगे? What will be the XCM? So this will be equal to, let's take one element here, because each element of this rod will have their center of mass at their own point. If we are taking a small mass, because if there is a point mass, then its center of mass is at that position itself, right? So if we are taking point mass here, and that is a small length dx we are taking, which is almost a point mass. So its center of mass will be here itself. So let's say it is at a distance of x. So for dx length, center of mass is at x distance. Okay? If we have to calculate center of mass of this whole rod, what we will do? We will simply use the formula m1x1 plus m2x2 plus m3. We'll add x dm. ठीक है, m1 plus m1 x1 plus m2 x2. This integration is nothing but addition. So x dm divided by sum of all masses, that is d. ठीक है. So कोई भी एक पॉइंट का सेंटर ऑफ मास लोकेट कर दो. उसके बाद what you need to do is you need to do integration covering whole portion of that continuous body. So I have taken this small element. This small element position of center of mass of this small element is x. So that is why I have written here x. What will be the mass of this small element? So mass क्या हो जाएगा? Mass per unit length is given, and length of this element is dx. So its mass will be a plus bx by L dx. ठीक है? So this is x dm, and integration you will do. I mean, rod's length will vary from A to B. So here A means x is 0, B means x is L. So this will vary from 0 to L. Similarly, you will calculate the mass. Mass में कैसे लिखोगे? Mass कैसे calculate किया हमने? What is dm? A plus bx by L dx. Again, mass is varying from 0 to L. I mean, mass is everywhere starting from 0 to L. So this is this. अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंटीग्रेट करना है. Simple. So do the integration. In first case, it will be how much? Ax square by 2 plus bx cube by 3 L 0 to L divided by how much it is? Ax plus bx square by 2. ठीक है? 0 to L. If we put the value, what value we are going to get? कितना मिलने वाला है बताओ? L का value आप put करो. So this is AL square by 2 plus this will become BL square by 3 क्योंकि एक square L कट जाएगा divided by AL plus okay, there was L here. This is not 2. This is L. ठीक है? So that is BL. Okay. आंसर AL स्क्वायर 1/2 plus 1/3 को आप क्या लिखने वाले हो?
That will be how much? 5/6, right? This will be, सब कुछ सही लिखा है ना मैंने? एक बार चेक कर लेना तुम लोग. So this is correct, okay? नहीं, गलत कर रही हूँ मैं. ऐड करो यार तुम लोग. ऐड कर लोगे सभी लोग? सबका आंसर आया अभी? चलो यहीं पे ऐड करती हूँ क्योंकि उधर मैं भूल जा रही हूँ क्या लिखा है. सो हाउ मच इट विल बी? ए एल स्क्वायर है, 3AL स्क्वायर प्लस 2BL स्क्वायर divided by 6, and this, sorry, divided by 6 and whole divided by 2AL plus BL. 2AL plus BL divided by 2. Solve it, you will get the answer. ठीक है? Yes. क्लियर है सबको? डन है. 3A plus 2B डिवाइडेड बाई 6. मैं लिख ही देती हूँ. तुम लोग बिल्कुल शांत बैठे हो, क्या हुआ बताओ? 2A plus B, and then there will be one L here, and this is equal to how much given? 7/12L. So this is 7/12L. So 6 से 2 times में चला जाएगा, and this is equal, this L will get cancelled. 6A plus 4B is equal to 14A plus 7B, and कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है. कहाँ गलत किया मैंने, बताओ? क्या गलत ऐड किया है? मैम, काफी. एल पुट करने से पहले ना वहां पे बी एक्स का स्क्वायर था अपॉन में. ओके, तुम्हें दिख रहा है ना? ये सही है. मुझे तो नहीं नजर आ रहा, तुम्हें दिख रहा है तो सही है, क्योंकि आंसर तुम्हें ही चाहिए. ओके. ओके, मुझे नजर नहीं आ रहा, आई एम रियली सॉरी. बट यू कैन सॉल्व इट. है ना? सब लोग कर लोगे. सही से ऐड करना, यू विल गेट द आंसर. ठीक है. आई शुड नॉट डू इट, राइट? अगर गलत जा रहा है रीचेक करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन तो सही है, कॉन्सेप्ट इज फाइन, बट स्टिल आई वांटेड द करेक्ट आंसर. कोई हेल्प कर दो यार. दिस मैम वन. ये हो जाएगा, सही है ये. थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो इसी से आ जाएगा. अच्छा, सही किया मैंने. नेगेटिव दिख रहा है इसलिए मैं नहीं कर रही थी. -3B जा रहा है, 14A - 6A, कुछ और ही जा रहा है ना. मैम 6A. पिछली साइड स्लाइड में गलती है. हाँ वही तो. कहीं तो कुछ किया है मैंने बेकार सा. मैम 2A/B के नीचे किया. अच्छा ठीक है, तुम सबको नजर आ रहा है तब ठीक है. मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. सो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पता है, VCM तुम लोग निकाल सकते हो. ठीक है, ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा. सो नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग टाइम हियर. Again, you can write position vector. I mean, VCM in terms of vector, ACM in terms of vector. You already know all these things, right? Let's do one more question. यहाँ पे ये वैल्यू इज -2 न्यूटन. ठीक है, दैट वाज मिसिंग इन द डायग्राम, सो आई हैव एडेड इट हियर. डू द क्वेश्चन, लेट मी नो योर आंसर. ठीक है, और कैलकुलेशन में जहां पे गलती करूँ ना, वहीं पे मुझे रोक दो प्लीज. उसके बाद वो ट्रांसलेट हो जाता है.
इतने इजी 3-4 क्वेश्चंस आ जाएं, 5-6, तो हमारा तो काम बन जाए, है ना। दिस इज एक्चुअली नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी कैलकुलेशन वाइज ऑल्सो, कॉन्सेप्ट वाइज ऑल्सो। सो आयुष, मे बी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो, एरिया सही से लो, मे बी देयर यू आर डूइंग मिस्टेक। जैसे तुमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा है ना, वैसे ही यहाँ पे भी एरिया को वाइजली कैलकुलेट करो, ठीक है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना तुम्हें। यहाँ पे देर इज ए 2 kg ब्लॉक दैट इज फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, इट इज एट रेस्ट फ्रॉम t इक्वल टू 0, इट इज एट रेस्ट, ठीक है। सो इनिशियली, its initial momentum, if you write, that is 0. From t equal to 0 onwards, it is subjected to a time dependent force, which diagram is given over here, ठीक है। The force varies with time, like this. The kinetic energy of block after 4.5 seconds is what? ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो जीरो, इनिशियल मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो, जीरो। दिस इज फोर्स वर्सेस टाइम का कर्व। इफ यू रिमेम्बर, फोर्स वर्सेस टाइम के कर्व के स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज डीएफ बाई डी हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। रौनक, नहीं, थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग, है ना। वी डोंट नो एनी क्वांटिटी डीएफ बाई डी बट वी नो वन क्वांटिटी दैट इज एफ डी, जिसको हम इम्पल्स बुलाते हैं, विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, राइट। So if you calculate area under the curve, you will be getting dp, ठीक है। dp निकाल लो, एरिया अंडर कर्व क्या होगा, इस पोर्शन का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इज 3 एंड द हाइट इज 4, सो दिस इज इक्वल टू 6। प्लीज तुम लोग कैलकुलेशन देखते रहना, ठीक है। एंड इसका एरिया विल बी हाउ मच, हाफ इंटू बेस इज हाउ मच, 4.5 minus 3, that is 1.5, height is -2, write it with proper sign, -2. So this is equal to -1.5. So what is the total area? Total area is equal to that is how much, 4.5, ठीक है। यानी कि dp, that is change in momentum, delta p is equal to what, 4.5. So pf minus pi is equal to what, 4.5. pi is what, 0. Final momentum is how much, 4.5. If you know momentum, you know kinetic energy, right? Yes, Mansi. Now it's correct. So now you know kinetic energy because you already know P square by 2mk, sorry, P square by 2m is equal to kinetic energy, ठीक है, डन है। तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लो, 4.5 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई व्हाट, 2 इंटू m, m is where, m is 2 kg. So 4.5 into 4.5 divided by 4, how much it will be, 45 into 45 कितना होगा बताओ, कितना जा रहा है, 1025, 1025 डिवाइडेड बाई 4। मैंने फिर कुछ गलती किया, देखो आज मेरा दिन थोड़ा खराब चल रहा है, मैं इसलिए कैलकुलेशन कम ही कर रही हूँ। मैम 2025 आएगा। हाँ वही वही वही। अभी मैंने 1 को 1 लिख दिया, 1 ऐड नहीं किया, 2025/4, थैंक यू। And this is equal to 20.25, right? So this is equal to 5.05 something, right? 5.06. So correct answer is your C. Concept wise, this was too easy. Calculation wise also too easy. Not much to do, right? तो बेस्ट है। अब देखो कोलिजन में ना थोड़ी चीजें मैं कुछ समझाना चाहती थी, अगर तुम लोग कोलिजन थोड़ा सही से अगर नहीं देखे हो तो, अगर पढ़े हो तो फिर देर इज नो रिक्वायरमेंट, बट देर इज वन कॉन्सेप्ट
I mean, if you know the basic of collision, you can solve any question using that. And that is, you have to look at along which line collision is happening. जैसे कोई भी body हो, oblique हो, सीधा collision हो, head on or oblique, whatever collision it is, in all collision, if two bodies are coming together, then you just locate the center of mass of these two bodies. Let's say इसका center of mass ये है, इसका center of mass A है. Join these 2 points through a line and call this line of impact. What is this line of impact? Along this line, body A will apply force on body B during collision, and B will apply force on body A during collision. So this is line of impact. And there is one more line which is of interest, that is this line Y, which is perpendicular to LOI. I love S.C. Verma. Reason is कि if you are doing questions from S.C. Verma, you are actually dealing with concepts in a very beautiful way. So, uh, I mean, good questions of collisions are over there also. यहाँ पे देखो इसका क्या जैसे हम लोग क्या करते हैं, there are two sorts of collision we have studied, elastic and inelastic. When the collision is elastic, we equate momentum, right? Initial momentum is equal to final momentum. Also in elastic, we do the same thing. Difference is in elastic we conserve energy, here we don't in elastic, right? But the momentum conservation which we write, initial momentum of system equal to final momentum of system, this momentum we write along which direction? We write that along the direction of line of impact. Because in oblique collision, what will happen? This body A after collision, maybe it is having velocity in two directions, one along the line of impact, other along, maybe it may be any other direction. So momentum conservation का जो तुम्हें equation लिखना है ना, that you have to write always along line of impact. Remember. Second thing, if you talk about this line which is perpendicular to line of impact, then along this line, not momentum of system will be conserved, momentum of individual bodies will be conserved. That is along this line, I will say for body A, initial momentum of body A will be equal to final momentum of body A. So along y-axis, whatever momentum A has before collision, same momentum A will be having after the collision. Why? Because along y-axis there is no force acting. Force is acting along LOI, which is perpendicular to y. So no component of force also along the y direction. So along y direction, momentum of bodies will be individually conserved, but along the line of impact, momentum of system will be conserved. Similarly, you write coefficient of restitution, that is velocity of separation by velocity of approach, right? Separation क्या होता है? Velocity of second body, that is यहाँ पे B है, तो velocity of B minus velocity of A after collision divided by velocity of A before collision minus velocity of B before collision. This is, we write coefficient of restitution. And again, these velocities are the velocities along line of impact, not along any other direction. ठीक है? तो बस ये चीजें याद रखना और कुछ भी नहीं. उसके बाद you will be able to solve all sorts of question. Elastic का तुम्हें मतलब पता है कि E is equal to 1 होता है. In elastic में E will vary from what? E क्या लिख रही हूँ मैं? E will be greater than 0, less than 1. Okay. And E is maybe equal to 0. And in that case, velocity of separation will be 0. That is the case of completely inelastic collision. That is plastic collision. In this case, after collision, both body will become one body. I mean, they will get attached to each other in such a way that they are not going to separate anymore. ठीक है? चलो. Let's do this question. मैंने जनरल बता दिया, अगर क्वेश्चन कहीं मिलता है, that concept will help you. अगेन इस क्वेश्चन में तुम लोग ज्यादा कैलकुलेट करने मत लगना, ऑप्शंस को कट करने की कोशिश करना पहले, ठीक है? बिकॉज एग्जैक्ट इक्वेशन यू वोंट बी एबल टू राइट, राइट? और हर इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ नहीं पता होता कैसे ड्रॉ करना है. सो बी वाइज, cut the options which clearly you feel like cannot be true. After that, you will reach to the right answer. So take help of this and do it.
Okay, I got one answer. सोहेल, नहीं नहीं, ऑप्शन सही से कट करो. ओके, हिमांशु, सही से देखो, फर्स्ट हाफ 0 से T तक तुम लोग सही से चेक नहीं कर रहे हो. बस तुम्हें वही चेक करना है, के बाद तो क्लियर है ना. सही से चेक करो फिर से. सोहेल, नहीं. दो ऑलरेडी तुम बता चुके हो, अब तुम्हारे पास दो बचा है. अब तुम उसमें जगल कर लो. ठीक है, और इस बार सही सही बताना. ठीक है. अच्छा, रौनक. यस. सोहेल, थर्ड गेस करो, क्या है. क्योंकि अगर थर्ड सही हुआ तो फोर्थ तो आंसर तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, है ना. अ, आयुष, नहीं. तुम लोग पैराबोला कर्व जानते हो ना, कैसे ड्रॉ करना है. फिर ऐसे आंसर्स क्यों कर रहे हो, तुम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो यार. इट डजंट सूट ऑन यू पीपल, आई वुड से. या फिर तुम लोग ज्यादा ही सोच रहे हो. क्वेश्चन क्या है देखो. देर इज अ टेनिस बॉल एंड दैट इज ड्रॉप्ड ऑन अ हॉरिजेंटल स्मूथ surface. So you're dropping it. Let's say its initial velocity is zero. Dropping means initial velocity is what? It's zero. Himansu, yes. So its initial velocity is zero. अब क्या हुआ, इसको तुमने किया ड्रॉप. ठीक है. It bounces back to its original position after hitting the surface. The force on the ball during the collision is proportional to the length of compression of the ball. तो यहाँ पे एक चीज हो रही है. यस रौनक, लेट्स सी. सो यहाँ पे बॉल जब गिरा है ग्राउंड पे, और after hitting the ground it is again bouncing back to the same position. What is the meaning of it? Meaning of it is collision is completely elastic. Energy is not going anywhere, right? But at the time when it is colliding, ball is somewhat getting compressed. Done it. And when it is bouncing back, that compression is again restored to its original shape, I would say. So no compression finally when the ball is going up. That is why it is able to rise to the same position. This is the thing. The force on the ball during the collision is proportional to the length. Which of the following sketches describe the variation of kinetic energy K with time t? कुछ नहीं करना तुम्हें, ये सब को यूज ही ना करो. वेलोसिटी को देख लो. वेलोसिटी, सिंस दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट. v इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, u प्लस ए टी, when the ball is falling down. In that case, I'm going to draw the diagram. ठीक है. So when ball is coming down, its initial speed is zero. Velocity will be gt. ठीक है. So v is directly proportional to t. Kinetic energy क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर. सो यू विल राइट हाफ एम वी का स्क्वायर जी टी स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हें क्या दिख रहा है, सम कांस्टेंट के डैश टी स्क्वायर. So it is along the y-axis. This is along time axis. So here y is equal to k dash t square. You would say, right? This is the equation of parabola, and this is upward parabola, right? यहाँ पे ऑप्शन देखो, ये डाउन है, कट हो गया. ये हो सकता है. सी एक हो सकता है, यहाँ पे भी अप दिख रहा है, यहाँ भी अप दिख रहा है. बी भी हो सकता है. डी नहीं हो सकता, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों कट हो गए. अब देखो हमें सी और डी में, बी में सेलेक्ट करना है. सो सी का बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है. सी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ड्यूरिंग टाइम टी, आई मीन इट्स कोलिजन इज मैक्सिमम. The point at which it is just touching the ground. After it will touch the ground, collision is happening, compression is there. So whatever kinetic energy it is having, that will get converted to potential energy somewhat, because there is compression, right? X हो रहा है.
So kinetic energy won't stay the same, maximum नहीं रहेगा, kinetic energy will decrease. ठीक है, so this cannot be true because यहाँ पे दिखाया है कि kinetic energy will stay the same. After that, kinetic energy will start decreasing as the ball will go up. No, it won't stay the same during the time of collision. Somewhat it will get converted into potential energy. इसलिए मैं ऑप्शन किसमें जा रही हूँ, बी. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. ठीक है, क्लियर है सबको? एनीवन, एनी डाउट? डाउट है किसी को भी? यस रौनक, यू वर राइट टू से दैट. यही छोटी छोटी चीजें समझना है. नाउ हियर द क्वेश्चन इज टू इजी, आई वुड से, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. क्योंकि यू पीपल आर राइटिंग जेई एडवांस, उस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इजी है सीरियस. सो डू इट. चलो एक काम करती हूँ, पोल लॉन्च करती हूँ, तुम लोगों को थोड़ा मजा आएगा. ऑप्शंस यू कैन पुट हियर आल्सो. वसंत, इज इट हैपनिंग? गौरव, लावण्य, I'm picking up the name who are not responding. Sena, your name is this or surname? What is it? चलो फिलहाल तो क्वेश्चन करो. Everyone focus on the question, ठीक है? Yasin, you joined so late. You were busy somewhere doing something. Yes.
Okay. Should we do it together now? Yes, ma'am. चलो ठीक है ठीक है. There is a ball of mass 0.2 kg, right? What is its mass? 0.2 kg. This is lying on a vertical post of height 5 meter. So its height is what? 5 meter. Let's put everything clearly. There is a bullet of mass 0.01 kg. So this bullet has a mass of 0.01 kg. This is initially moving with v meter per second speed. What is happening? It is moving in the horizontal direction, and it hits the center of the ball, and it is hitting the center of the ball. After the collision, the ball and bullet travel independently like this. Okay, one is traveling here, another is traveling here. Now the ball hits the ground at a distance of 20 meters. So this is your ball coming here. Okay, and here is the bullet coming. Okay, at a distance of this. Initial velocity निकालनी. तो देखो कुछ नहीं करना हमें. Let's say, I mean, there is collision happening between bullet and ball. Bullet is here, ball is here. Initially, it is at rest, and this is moving forward with a speed u. So, if I write initial momentum of the system is equal to how much? Mass of bullet into velocity of bullet. During collision, their speed will change, but final momentum will remain what? Conserved. So, if bullet is going this way and ball is going this way, what is the meaning of this? Meaning simple hai. After collision, bullet and ball are having horizontal speed only. They don't have any other component of a speed. Because if at certain height something is kept and it is falling down like this is a case of a projectile where you are throwing object with certain horizontal speed from there. Vertical speed being zero at the top, right? So it has only horizontal component. So let's say after collision, this bullet has a velocity of v1 and this ball has a velocity of v2. ठीक है. So v1 मैंने किसको माना है? बुलेट की स्पीड को I assumed v1 and this is v2. Now we can calculate v1 v2. कैसे कर सकते हैं? देखो. See one thing, in both the case, there are two projectiles here, one of ball, another of bullet. Both are falling down by the same height, 5 meters. You must have gone through such sort of projectile, and here time of flight, मैंने भी बताया है. Either time of flight can be written as what? 2h by g. I'm not going to go into the derivation and everything. You should know here time of flight is this. So 2 into h का value क्या है? 5. G is how much? G is 10. Okay. Yes. So this is 1 second. कितना टाइम लग रहा है नीचे आने में? 1 सेकेंड लग रहा है. दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट. हमें निकालना क्या था? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस. अब देखो हमें रेंज पता है. इंटरेस्टिंग थिंग है ना, वी नो द रेंज. एंड हाउ वी कैलकुलेट रेंज इन सच सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल? वी सिंपली राइट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू द टाइम ऑफ फ्लाइट. सो रेंज ऑफ बॉल अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो कितना है? दिस इज योर 20. And this 20 will be equal to how much? Time of flight is 1 second. Speed मैंने कितना लिया था? बॉल लिख रही हूँ ना, v2. So v2 equal to 20 meter per second. Range of bullet कितना होगा बताओ? Range of bullet is 100. It's given. And this will be equal to bullet की velocity, that is v1 into how much? Time of flight, that is 1. So v1 is 100. v1 v2 हमें पता है. Now what do you have to do? Do the momentum conservation. So momentum conservation से हमें क्या मिलने वाला है? m into v. m is mass of bullet. कितना है? 0.01 into v is equal to final momentum. आप लिख लो mass of ball, that is 0.2 kg, and ball का speed क्या है? 20 plus, and this is bullet 100 into 0.01. सही लिखा है ना मैंने? देख लेना एक बार. So this will become 2 into 2 4. This will become 1. 4 plus 1 5. So 0.01 v is equal to 5. So v will be 500. So correct answer will be which one? It will be D. 500 meter per second. So
चेक करती हूँ, यस इट इज डी। डन इट, कुछ नहीं करना था तुम्हें, सिंपल, यू जस्ट नीड टू हैव द फॉर्मूला। टाइम एंड अगेन यू डोंट नीड टू थिंक ऑफ कि अच्छा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो सकता है। You should be so much in the practice that by looking at the question, you should get the idea. Okay, range is given, time of flight I can see. We can easily calculate. If range and time of flight is I mean, it's something that we can calculate, then B1, B2, we can calculate by using momentum conservation. So, yeah, that way you can go around it. चलो अब आप इसको करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और करो। You can do it. All the questions today are of nature that you can easily crack. I'm telling you. Questions अच्छे हैं, easy है, मतलब तुम्हारे लिए अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छे हैं। Ma'am, Scoring questions, yes. ma'am, before it, one question is also there. Which one? मैम एक्चुअली यहाँ पर तो दिख नहीं रहा मैम, लेकिन आपने स्लाइड जो भेजा था उसके अंदर था। क्या नहीं दिख रहा? मैम एक क्वेश्चन था, उसमें डाउट था, वो पूछना था वाला। Which question? अच्छा, you are having question. Can't you send me on WhatsApp? You are in the group, यस मैम। so you can text me. You can, or you can put it in the group. I will take it up from there. मैम आपने स्लाइड भेजा था उसके अंदर था वो क्वेश्चन। अच्छा, मेरे स्लाइड के अंदर, इस स्लाइड में? बट इसमें नहीं दिख रहा मुझे, इसके जस्ट बाद ही था। नो, आई मीन yesterday जो मैंने क्वेश्चन दिया था, यस यस। सो मैंने सीक्वेंस अरेंज किया एक्चुअली, मे बी दैट इज समवेयर एल्स, बिकॉज आई मीन जो इजीली डुएबल था पहले मैंने उसको पहले रखा, जो लेंदी था उसको थोड़ा बैक किया, लेकिन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सारे ही इजी हैं। सो विच वन यू आर लुकिंग फॉर? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो? यस मैम बिल्कुल। अच्छा, दिस वन। तो ये पहले करें, ठीक है, लेट्स डू इट। चलो इसी को करते हैं पहले, कर लेते हैं, कोई नहीं। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी बेसिक, पढ़ने में इतना लंबा है, दिखने में लंबा है, बट दिस इज वेरी बेसिक, एंड द सेम क्वेश्चन इज देयर इन एससी वर्मा, इट से सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, दिस केम इन जेईई एडवांस। करो सभी लोग, टाइम लोअर करो। इसके बाद हम बैक टू दैट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है।
ये रौनक एक बार चेक करो। नहीं, ये तो नहीं होगा। नहीं, this won't be the case. सिस्टम को सही से तुम लोग नहीं ले रहे हो। आई वुड से सिस्टम को ध्यान से देखो। तुमने देखो फिजिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सिस्टम। समटाइम्स ना वी सिंपली सॉल्व क्वेश्चन, वी डोंट कीप इन आवर माइंड सिस्टम क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इवन इफ यू आर इग्नोरिंग द सिस्टम यू आर गेटिंग आंसर्स राइट। सो कहीं ना कहीं वो हैबिट एक बन जाती है टू नॉट कीप सिस्टम इन आवर माइंड एंड ऑल। यहाँ पे इफ यू आर इग्नोरिंग दैट you are getting it wrong, I would say. So maybe that is where you are doing mistake. चलो हम साथ में करते हैं। तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा। सो क्वेश्चन इज व्हाट, देयर इज अ ब्लॉक ऑफ mass m, capital M, and then there is a small mass m, small m, right? Gradually it will slide down till it will reach here. And everything we are asked just before this small mass M will lose contact with this bigger block. Done it? So both are together till that point. What we are asked? So when the mass loses contact with the block, its position is, and its position is given as x. ठीक है? Not at this point. यहाँ पे तो x0 दिख रहा है. At the point when this block will slide down, तब की बात कर रही हूँ. Which of the following is are correct? Let's look at it. अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें। दिस इज द ब्लॉक, राइट? यहाँ पे करती हूँ मैं। दिस इज द ब्लॉक, दिस इज अ कैपिटल M and this is small m thing here. Let's say my system is m plus n. So what is my system? M plus n. And when this small mass m will slide down this curvature, what is happening? Any external force is acting. ग्रेविटी को हटा दो, क्योंकि ग्रेविटी तो इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू पुट एनी इफेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो जब ये मास स्मॉल मास m रेस्ट में था, देन ऑल्सो ग्रेविटी वाज एक्टिव। डन है? so when motion started, still gravity is acting, and here whatever force, other forces are acting is either normal reaction again, which is a force between m and m. So this is the internal force. डन है? मेरे कहने का मतलब ये है कि नो अदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और एनी अदर फोर्सेस आर कमिंग इनटू अकाउंट. ओनली इंटरनल थिंग इज हैपनिंग एज द small mass m is sliding down. Yes, it is sliding because of down because of gravity, but before that also gravity was there, after that also gravity is there. So gravity will affect the position. It is going to affect the position. Done. But it will affect the position ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे देखो यहाँ पे इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करते हैं। सी हियर दिस ब्लॉक m, सपोज इट कैपिटल M का सेंटर ऑफ मास यहाँ है और इनिशियली स्मॉल m मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ था। So both will have their x component of center of mass, y component of center of mass. So yes, definitely y component of center of mass is getting affected because of the gravitational force, but x component is not getting affected because in x direction that मैंने बोला कि whatever affect the x cm, ठीक है? And in x direction there is no external force acting. It means x cm will remain. Change कब करता है? When there is external force acting. So x cm तुम्हारा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। और जब भी सेंटर ऑफ मास कंजर्व होता है, x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. So let's check. Let's take a small change on the both sides. So delta x cm you will be writing as m1 delta x1
plus m2 delta x2 divided by m1 plus m2. In case x is conserved, delta xcm is 0. So m1 plus m2 into delta xcm whole will become 0. So what you're getting finally is m1 delta x1 is equal to minus m2 delta x2. And same thing you have to do here. So अब चलो x coordinate को हम ध्यान से trace करते हैं. So initially तुम्हारा finally हम क्या लिखने वाले हैं? What will be the change? I mean a small m mass कितने distance से आगे गया? X wise, it moved forward by a distance of r. R है ना? कितना है? Yes, that is r. So it is m1 मैंने लिया है कैपिटल m को. चलो कैपिटल m कितने से मूव करेगा? लेकिन एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है तुम्हें. जब कैपिटल m मूव कर रहा है ना, small mass m is on the surface of capital M. So if capital M is moving this way, it means a small mass m is also moving in that direction. ठीक है? So यहाँ पे आप क्या लिखोगे? m plus small m ये मूव किया इधर कितने डिस्टेंस से? सपोज कर लो x डिस्टेंस से मूव किया, और स्मॉल m इंडिपेंडेंटली कितने डिस्टेंस से मूव किया था? r माइनस. So x का वैल्यू what we will be getting? X का वैल्यू we will be getting as small mr divided by n plus m. Is it correct? Option C will be correct. X component of displacement of center of mass of the block M is this much. Block M कितना move करेगा? This much. And here why I have added plus m? Because when m is moving in this sense, then upon it capital M is also there. So overall m plus m is moving, and that is why I've written here m plus mx. So from here you will get x is minus mr by m plus m. So when obviously if small m is going in this sense, then m plus m should move in this sense. So that center of mass will remain at the same position. So हमें x मिल गया. First thing. Second हमें क्या निकालना है? Velocity v. V is what? V is the velocity of this block. ठीक है, small block. कैसे निकालोगे बताओ? चलो इसी स्लाइड पे करते हैं इसको. तो how we can do that? Again सिस्टम को ध्यान में रखो. When this small mass m is coming from here to here, what is happening? What is happening? Gravitational force is acting. No external force acting. No non-conservative internal force is acting. Energy will be conserved. Done it? And when this block is moving like this, when this small mass m is here, it has both x component and y component of velocity. Similarly, if a small m has x component of velocity, capital M will also have x component of velocity. रहेगा. ठीक है? Such that momentum will be conserved again. बट हमें यहाँ पे v निकालना है. कैसे निकाल सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं बताओ? वी कैन यूज एनर्जी कंजर्वेशन ऑल्सो. जैसे m प्लस m तुम्हारा सिस्टम है, राइट? राइट द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो इनिशियली नो एनीवन ऑफ दिस इज नॉट मूविंग, m और स्मॉल m, नो काइनेटिक एनर्जी. इनिशियली लेट्स से इसको अगर x इक्वल टू 0 माना है, और इसी को तुम मान लो यहाँ पे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 ऑल्सो. लेट्स से सो दिस स्मॉल m, या फिर ऐसा करो, कैसे लेना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी? कैसे ले सकते हैं बताओ? रेफरेंस लाइन मान लो. Okay, that small m will also have certain potential energy, right? This thing is not given, right? मुझे यहाँ से everything I need to remove it. This height is not given, right? ये वाला height given है क्या? Let me check. No. अच्छा ठीक है, नहीं भी गिवन है तो हो जाएगा. कैसे देखो, सपोज कर लो m का सेंटर ऑफ मास यहाँ है कहीं y डायरेक्शन में. ठीक है, इनिशियली यहाँ है. सो its center of mass initially is here at a height h, let's say. So initial potential energy of the system क्या हो जाएगा? m g h plus m g r. Agree? ये होगा. ठीक है. Now let's come back to the final potential energy.
मैंने R इसलिए लिखा क्योंकि चलो लेवल यही लेकर चलते हैं, यही लेकर चलते हैं, ठीक है। और या फिर तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे, बार बार लेवल चेंज करूंगी तो रहने दो। तो Mg2R लिखना चाहिए मुझे, है ना। तो लेट्स राइट Mg2R इंटू 2 कर दो आप। डन है, दिस इज द एनर्जी। If you write the final energy, so finally H is not changing, right? This capital M mass का center of mass in y direction is not changing, so this will remain same. So again mgh ही, इसलिए कट जाएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस फाइनल kinetic potential energy of a small m कितना होगा, mgr, and what will be the kinetic energy of both the masses. So let's say m mass का velocity यहाँ पे इस direction में v है which is given already, तो कैपिटल m मास का आप क्या ले लो, ये ले लो, ठीक है। सो यहाँ पे आप ऐड कर दो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। नाउ वी और वी डैश निकाल सकते हो कि नहीं, ये बताओ। यस, दिस वी कैन कैलकुलेट और नॉट, लेट मी नो। कैसे निकालोगे बताओ, ऐड करो तुम लोग। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वी डैश? कैन यू डू मोमेंटम कंजर्वेशन इन द एक्स डायरेक्शन? कर सकते हैं? क्या हुआ, सभी लोग शांत हो गए? यस, कर सकते हैं यार, यहाँ पे कोई इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा ना, वी कैन डू इट। तो यहाँ से आप एक काम करो, कैपिटल एम मास के लिए क्या लिखोगे, एम वी डैश इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। यहाँ से तुम वी डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आई वांट टू गेट द आंसर एक्चुअली। सो लेट्स राइट हियर, एम जी एच को मैंने काट दिया, mg2r था, यहाँ पे मैंने mgr लिखा, और हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम, और इसको मैंने क्या लिखना है, वी डैश को एम वी बाई एम में लिखने वाली हूँ। कौन सा एम था, एम वी बाई कैपिटल एम, ओके। एम वी बाई कैपिटल एम में लिखने वाली हूँ, स्क्वायर कर दो। एम जी आर इज इक्वल टू, यू डू थिंग्स प्रॉपरली, ठीक है, सो दैट मिस्टेक ना हो हमसे। हाफ एम एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, दिस स्मॉल एम, वन स्मॉल एम फ्रॉम हियर विल गेट कैंसिल, टू को इधर लेकर जाओ, टू जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस हाउ मच, प्लस एम वी स्क्वायर बाई एम। आंसर दिख रहा है तुम्हें? आंसर हो जाएगा टू जी आर डिवाइडेड बाई वन प्लस स्मॉल एम बाई एम रूट अंडर। सो यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। सो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। दिस वाज द क्वेश्चन। इज इट क्लियर एवरीबडी? तो यहाँ पे दो चीजें थी, एक था तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट और दूसरा था मोमेंटम कॉन्जर्वेशन, दोनों ही हम अप्लाई कर सकते थे एंड वी कुड हैव गॉट द आंसर, एंड देन एनर्जी कॉन्जर्वेशन। क्वेश्चन इज डन, ठीक है। एच का यूज नहीं था बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल एम वाज नॉट चेंजिंग, it is at the same vertical level, I would say that its vertical level is not changing with time. Done. चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ सभी लोग, लेट्स डू दिस। जल्दी से करो so that we can do 2-3 more questions. जल्दी से मतलब टेक योर टाइम, डोंट वरी।
Himanshu, that's not correct actually. हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, इन मीटर at t equal to tau. So I mean what you all must be doing is, आपने vt दिया हुआ है, xt निकाला होगा, है ना? So v as a function of time t is given as v naught e to the power minus t by tau. So this is dx by dt, and this is equal to v naught e to the power minus t by tau dx v naught e to the power minus t by tau dt. इंटीग्रेट कर लो. Initially at t equal to 0, displacement is what? 0. Let's say at any time t, displacement is t. ठीक है? Sorry, displacement is x. So here x will be equal to how much? इसको आप इंटीग्रेट करो, कितना आएगा? v naught how much we are going to get? v naught e to the power minus t by tau divided by minus 1 by tau. Right? So Yes, ma'am. yeah, thank you. So this is v naught. V naught we don't know, right? We can calculate with the information given. Limit रख दो यहाँ पे 0 से t. So minus 1 by tau को आप बाहर ले लो. So this is tau with minus sign here. E to the power minus t by tau, and if you are going to put 0, this will become 1. This is this thing, right? Himanshu again incorrect. अब हमें क्या करना है? हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट टी इक्वल टू टाउ. तो यहाँ पे टी इक्वल टू टाउ अगर आप रखोगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस वी नॉट टाउ. टी इक्वल टू टाउ रख दोगे ई टू द पावर माइनस 1, दैट इज 0.37. 0.37 minus 1, that is how much? 0.63, right? So 0.63 minus 0.63, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, into v naught tau. Now the question is how to calculate tau. So tau आप निकाल लो. यहाँ पे देखो एफ डी टी का इंफॉर्मेशन दिया है. So this is basically change in momentum. Just before time t equal to 0, it is 0. Just after time t equal to 0, it will be some momentum because impulse is acting. Impulse acting का टाइम बहुत छोटा होता है ना? Yes, Ayush, that will be the answer. तो डेल्टा पी यहाँ से देखो, डेल्टा पी क्या है? 1 न्यूटन पर सेकेंड. और डेल्टा पी हम निकाल कैसे सकते हैं? वेलोसिटी को टी इक्वल टू 0 टाइम पे आप निकाल लो यहाँ से इक्वेशन से. तुम कहोगे वेलोसिटी तो 0 दिया हुआ है इनिशियल, but you are applying impulse which acts for a very short interval of time. So just after t equal to 0, if you are taking velocity, so for that also t will be very 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 small, almost closer to 0. तो यहाँ पे v naught e to the power t इक्वल टू 0 रखा ना, तो 1 हो गया. सॉरी, e टू द पावर 0 1 हो गया, यानी कि v इक्वल टू v नॉट. और क्या गलती किया मैंने? क्या कर रही हूँ ना? टाउ इज गिवन राइट 4 सेकेंड. v नॉट आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट. ओके, वेलोसिटी मैंने निकाला नहीं यहाँ से, सॉरी सॉरी. So velocity after just at time t equal to 0, just after time t equal to 0 is equal to how much? v naught. अब वी नॉट का वैल्यू आप निकाल लो. डेल्टा पी हमें पता है कितना है? 1 न्यूटन पर सेकेंड. तो दिस इज पी एफ माइनस पी आई इज 1. पी एफ इज व्हाट? मोमेंटम जस्ट आफ्टर द इम्पल्स इज एक्टिव. सो दैट इज इक्वल टू एम इंटू वी minus initial is what? 0. So let's write it as 1. Mass is how much? Mass is 0.4 into v is equal to 1. So v equal to how much? 1 by 0.4. ठीक है. यहाँ पे आप टाउ का वैल्यू क्या रखोगे? टाउ इज 4, वी नॉट इज 1 बाई 0.4. 4 4 कैंसिल होगा, 0.1 10 ऊपर जाएगा तो 6.3, यानी कि करेक्ट आंसर विल बी योर वर्ड 6.3. ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ से वी नॉट निकालना था इस एफ डी टी के कॉन्सेप्ट से, because that will give you change in momentum. Just before momentum is 0, just after acting the impulse, it is mv. From here we are calculating what?
V naught because V is equal to V naught. ठीक है? Do this question now. Let's get it done. ठीक है? तो सभी लोग हो रहा है सबका या मैं करूं? चलो एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है? सो क्वेश्चन क्या है, देखो सिचुएशन कुछ ऐसा है, हमारे पास एक सीट है, ऐसा सीट ले लो आप, और ये इसके हेल्प से ऐसे टंगा हुआ है हॉरिजेंटली, ठीक है? इसके हेल्प से राइट? सो सम व्हाट हमने इसको कुछ तो सपोर्ट दिया है ना, टू दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक वी हैव गिवन सम सपोर्ट, बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट it is able to stay horizontal like this. But again, it won't be able to stay horizontal like this just with the help of support. For keeping it horizontal, there is one extra thing happening here. What we are doing, we are striking it with n number of balls per second so that it stays in rest. What is the meaning? Meaning means, let's see here, there is a wall. ठीक है? So there is a wall here and you have to keep it horizontal. You have added one clamp है यहाँ पे, but clamp is not enough to keep it in horizontal sense. उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? We are hitting it with certain things. So when we are hitting it, what is happening? Whatever bullets are striking it, it is colliding with the wall, with the rectangular slab. During collision, it is applying force on the slab in the vertically upward direction. And also slab will provide force to the bullet in the vertically downward direction, and so bullet will come down after collision like this. Okay? But in total, what is happening? Because of n bullets are striking per second, there is force acting on it. Okay? So overall, if you try to write the free body diagram of it, let's say its center of mass is somewhere here. So mg will act in the downward direction. And because of this collision, upward force is acting. Let's say this is F.
ठीक है. Yes, Mansu, very good. So let's say this is F. डन है. अब ये तो नहीं कह सकते F इज इक्वल टू एम जी. F इक्वल टू आप एम जी करके देखो 30 हो जाएगा. दैट्स नॉट द आंसर. हम क्या मिस कर रहे हैं? वी आर मिसिंग वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज दिस क्लैम्प इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग फोर्स. तो ये भी कुछ अपन ऐसा कुछ फोर्स देता है. अगर इसकी जरूरत है तो देगा, नहीं जरूरत है तो नहीं देगा. इन यस्टरडेज क्लास आई हैव टोल्ड यू दिस इज एडजस्टेबल. So here, since vertical का requirement है, vertical force must be acting because of the clamp. Done है? So this support is applying force. If we go with the translational equilibrium, if मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी. okay, I'm really sorry. Let me share the slide. All of a sudden it went nil actually, network. चलो, ठीक है. So here we will try to calculate what you got up to this point, right? FDT and all. यस मैम. ओके, ठीक है. सो एफ डी टी लेट्स कैलकुलेट इट. सो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा पी. और यहाँ पे देखो, सिंस दिस इज अ वॉल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, सो एंड बुलेट इज अ मास इज वेरी स्मॉल. जैसे देखो, इसका मास है वन, हाउ मच, दिस इज 0.01 kg and this is 3 kg. So this is almost 100 times more bigger, right? So in this case, if bullet is coming with velocity v, it will also go with velocity v in elastic collision. We already know this, right? So change in momentum is going to be how much? 2mv. Done it? And this is equal to fdt. And there are not one bullet. For one bullet, we will be writing what? For one bullet, we will be writing 2mv. There are n number of bullets. And those n number of bullets are striking in what amount of time? In 1 second. So यहाँ पे आप लिखो n, तो dt हो जाएगा 1 second. यानी कि f is equal to 2nmv. Done it? Is this
the thing. No, there are also n number of balls striking per unit area per second. So how much area is this? This area is equal to A into B by 2. वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे. A का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, B का वैल्यू है 2 मीटर by 2. So area is 1 basically. So if on this area how many bullets are striking per second? N bullets per second. So this is correct. 2 NMV. Force is this. अब आप क्या करो, टॉर्क लगा लो. सो अराउंड द सेंटर ऑफ मास around this clamp end. ठीक है, because through this certain unknown forces are passing. So if you calculate it now, G. So this R is equal to how much? B by 2 into mg, and this torque is in this direction. What will be the another torque? Another torque will be because of force F. Where will be the center of this force F acting? So this force F is acting throughout the surface area. Center we can take at the center of this this cell, this shaded area. So its center will be at a distance of how much from here? This is B by 2. So this is B by 2 and this hole is, this is B by 4. I'm really sorry. B by 4 and this is B by 2. So total distance from here to here is how much? B by 2 plus B by 4. So that will be 3B by 4. ठीक है. So torque will be how much? F into 3B by 4. So यहाँ पे आप लिख लो F into 3B by 4 should be equal to B by 2 into mg. अब आप इक्वेट कर दो दोनों को. B को कैंसिल कर दो. This 2 will get cancelled. What we have to calculate? Calculate क्या करना था? What is V? Okay. So F equal to how much? 2 mg by 3. Let's put it here. F equal to 2 mg by 3. और F equal to क्या था? 2 nmv. So this is 2 mg by 3. This 2 will get cancelled. N is N is what? N is given something. N का value is 100. N is given or not? Ma'am, it's 100. Yeah, it's 100. Yeah, N is 100. So this is 100. Small m is 0.01. This is V. Capital M is 3. This is 10 by 3. So clearly V is equal to what? 10. Answer is 10. Okay. This question we already did. There are 1, 2, 3 questions left. What we will do is, आप लोग इस क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व करना. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजी है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना. इसको भी करना. ये भी बहुत इजी है, तुरंत हो जाएगा. इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा. और ये क्वेश्चन भी है. 4 क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं. व्हाट शुड वी डू? इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी पिकिंग अप सम क्वेश्चन, बट आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग थोड़ा क्वेश्चन करके आए होगे. ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन प्लीज तुम लोग खुद से अच्छे से ट्राई कर लेना, सो दैट इन द क्लासरूम आई कैन गो फास्ट. आई कैन डिस्कस दिस 4 क्वेश्चन क्विकली. ठीक है, एनी डाउट एनीबडी? एवरीवन लेफ्ट? लेट हो भी रहा है सबको. ठीक है, तुम लोग लंच करो, आराम करो. आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग केमिस्ट्री क्लास. किसी को डाउट है तो बोलो. आई एम हियर. नो डाउट? चलो ठीक है, फिर अपना केयर करो. एंड यू कैन आस्क डाउट्स देयर आल्सो इन द ग्रुप. ठीक है.